Assalamu alaikum, everyone. My name is Khabar Arif. I am the controller and coordinator of today's training. Our topic of training is post-failure aspects and recoveries. Let me give you a brief introduction about our trainer. Mr. Ahmad Hanif is our trainer today. He is a Harvard graduate in public policy. He is providing services to numerous organizations, lawyer and consultant to aviation industries like Boeing and Emirates, legal advisor to Saudi research and media groups, management systems international USA, Arab News, Vox Asia Productions. He has also been awarded a Medal of Appreciation by the President of Pakistan. Question and queries will be addressed in Zoom chat. Mr. Hanif, you can start the session now. Assalamu alaikum ji. Today's topic is the post-failure aspect and recoveries. So coming directly to the topic, first thing I just want to add on this one, we need to understand the causes. First of all, what are the causes behind any failure which we encounter in our lives? For me, the first thing which I interact in my life, if you haven't have the taste of failure, you cannot have the taste of success. So अब सबसे पहले आपको जिंदगी में अगर फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो नेवर get discouraged from this thing in your life. And the most important thing, we need to identify the reasons behind. First of all, crashes होते रहते हैं because मेरी फील्ड जो है वो एविएशन की है और उसमें अक्सर जो है वो क्रैशेस, एयर क्रैशेस होते रहते हैं, टेक्निकल फेलियर्स होते रहते हैं, चीजें फेलियर, ये आपकी जिंदगी में भी अक्सर होता रहता होगा. लेकिन द मेन चीज ये है कि हम उसके कॉजेस को पहले देखें कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड. सो अनलेस एंड अनटिल हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारी रीजंस क्या थी, हम सक्सेस नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट कोई भी हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें कभी भी हम सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते. सो उन कॉजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम है, टाइम फैक्टर. उस टाइम फैक्टर की आप वेरिएशन इन रिस्पेक्ट में कह लेंगे, क्या हमने उसको प्रॉपर टाइम दिया उस प्रोजेक्ट को, द फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, क्या वो इतना वर्थ था कि हमें इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए था? द टू एस्पेक्ट, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, कि क्या हमारा टाइम, क्योंकि बिकॉज यू कैन अर्न मनी, यू कैन हैव मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, but the first thing you can never have again is the time. Time is always like it's moving very fast. So the most important thing in your life one should consider is the time, waste of time, and how to utilize the time in any project or in any you can say kisi bhi cheez jo bhi, whatever you're doing in your life. The second most important thing which one should do is the lack of interest, which is again, it is related to your, unless and until you have passion about doing something, you cannot do anything right or successful, because the two things in your life happens. One which you are always putting by force, another thing which is your passion. Once anything comes into your passion, once anything which you are doing, it becomes your passion, naturally the energy level or whatever the charm you are having that in that project, it enhances. So for me it's very important कि आपका लाइफ में इंटरेस्ट होना जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डेफिनेटली यू विल बी एनकाउंटरिंग विद अ फेलियर. दिस इज वन लाइक एन इजी प्रेडिक्शन यू कैन से, कि आप अगर आप किसी भी टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आपको बाय फोर्स या किसी के मजबूरी के तहत आपको किसी ने ऐड कर दिया है, so that is one problem you are encountering in your life. Third one is again which is again related to the project, is the team, the selection of the team, the people you are having. The first important thing is the technical people you are having in that project. Let's suppose this you're doing some construction of the building or some dam or some any other construction. So you need to have the best team around, like surrounding you. Even yourself should be the best one in this respect. You know what you are doing, what's your agenda in that one, what's your technical capabilities, the most important thing if you're doing. Then the team you are having it,
Like if you're doing any construction and you hire an aviation engineer, it will never work. So you definitely be needing you can say civil engineer, the architects, and the relevant field or field persons. You can say you can never add somebody from car mechanic because it's the same job. No, it's not the same job. It's a different job. So you need to have the team, the best of the team. Unless and until you have the good team, or you cannot have, you can say if you have irrelevant people into your team, so definitely you will be heading towards a disaster. And then what will happen? You will be blamed for. So the third part, which is again, I'm mentioning this one is for me, it's very again important for the training part before going into any project. That should be very important. You must know, because you're आप लोग mostly construction business में हैं या dams के या sometimes आप कह लें कि प्री कंस्ट्रक्शन फेज में होते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग पार्ट का मतलब ये कि आपको जिस एरिया में जो चीज आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसके एस्पेक्ट्स, उसके उस जगह के उस ट्रेन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, देन वहां पे हम क्या चीजें काउंटर कर सकते हैं. नंबर वन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड. ऑल्दो इट इफेक्ट्स इन अदर बिजनेसेस एज वेल, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वेदर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पे ये चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, और उसके लिए हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू बी आर फॉर गोइंग इनटू एनी प्रोजेक्ट. सो द ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट with the best of the team, and again they need a training. ये नहीं कि वो they are the best ones and they do not need a training, because हर train, हर project, हर construction field और construction style is different. So आपको training part is very important, and आपको उसमें ये जरूरी है कि आपका हर काबिल बंदा भी जो है ना उसमें वो train हो. Coming, the fourth one is the preparation. Preparation means the equipment you need to have. Equipment wise, you have to be strong in to avoid any failure, which is very important. Like आपको अगर bulldozer की जरूरत है and you are using some other equipment, so definitely you are wasting the time, and then you will be heading towards a disaster, and it's a failure, and it will come a failure. The last one, you always have to have negative aspect of anything in your project, which is again important in this way. Most of the time we are overly positive, okay, this will happen. We never keep the negative part in our projects or in our you can say life. Okay, what if this does not happen? What will be the aspect? What will be the impact of that thing? So most of the time we are overly positive. The word over is always dangerous. Even it's overconfidence, it's over education, it's over healthy, even is always very dangerous. So one has to be normal, keeping the negative aspect of your life as well. Negative aspect is a failure. You can be failed, and the humans fail. This is the best part of your life, that you are blessed if you are interacting with the failure. This is the beauty of life. So for me, it's very important you to understand the causes of the failure you have experienced. So unless and until you do not know the failures causes, you will not head towards the success. And then once you interact or counter these problems in your life, then you head towards a successful project. Coming again, the second part of this our today's discussion or this lecture or kind of things is recoveries. How to recover once we've experienced the failures. It's okay, आपने failure, आपने कोई नुकसान या कोई चीज प्रोजेक्ट में फेस कर लिया है, so it happens, no problem. Recoveries क्या है? Recoveries, the most important is you need to compose yourself and be if you're a leader in any project, if you're leading anything or you have the team leader, so you must not discourage your team. This is the most important thing. We always forget that, okay, this happens, now what? You start blaming on each other, you're putting blames on others.
be a leader, hold that negativity. Okay, this happens, no problem, we will construct, we will do another thing, we will go for the new project with the better team and the better preparation and the better training. So recoveries are very important. So for me, if I have to go for the, like after encountering any failure, if I have to go for the project again, or any new, in your language, in any new construction design or the construction of any buildings whatsoever, so you need to have plans, multiple plans, not just one plan. You have to have 10 plans, A, B, C, D, E. So if one fails, you definitely be that there is another plan, B to be executed, C to be executed, D to be executed. So that gives you a confidence of getting a success in terms of your achievement. And but there is always um, success is always, you can say that it gives you, it charges you, it energizes you always in your life. So for me, the basic things are these are the basic things for me. Yeah, coming to you people, I just want to know what kind of problems or what kind of questions you have in your mind with related to this topic, and what you want me to answer those questions. I want directly into that one, rather telling you about my success and failures and this and that. Just let's be straight to the questions. If you have, just ask me, and I will be trying to answer those questions or queries, or what to do in such cases, or if you have interacted or counter any problems in your life. So this definitely be I will be trying to help you out in this way. G. Can you hear me, Howard? Ji, sir. Yes, I can hear you, sir. Yeah. So I'm there to answer the questions. If anybody in the group, and they want to have questions, queries, or whatsoever, सर because मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे वो चैट बॉक्स में वो पूछ सकता है, आपको भी वो शो हो जाएगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. जी जी, sure. In the end, I will be giving you a life tip to make any project successful, which is, and I don't think so somebody has ever told you people that how to make any project successful. So it's a life tip for all of you. So do we have the questions or the queries from anybody? सर मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन राइट नाउ तो अभी कोई नहीं है, तो आप कैरी ऑन करें अपने ही एक्सपीरियंसेस के साथ. तो जैसे ही कोई होगा तो इंशाल्लाह आपको भी चैट बॉक्स में वो नजर आ जाएगा. यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. That's good to know. Let me give you a brief of myself, with the background of myself. I started with the, actually I wanted to be an architect, and my father, I just got admission in NC, and my father said, yaar idhar to tum kaam se bhi jaoge. So he wanted me, another option was, because NC se sabse zyada close, Lahore NC se जो सबसे ज्यादा क्लोज जो बिल्डिंग थी वो, और मेरे फादर क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि तुम ये लॉ ज्वाइन कर लो. सो आई ज्वाइंड लॉ बाय, यू कैन से, not of my choice but of my father's choice. So the first failure I interacted in my life was the educational failure. It was not negative, it was positive, because I was, in one aspect I was failed in my desire, but on the other side, I was making somebody else desire successful. In other way, meeting his life, you can say, dream successful. So if you're helping somebody's out as well in somebody's life, or making somebody's dreams coming true, it's also a success. It gives you a satisfaction and encouragement in your life as well. So the thing is that
in your life, one thing make it clear, राज़िक जो है वो रब की ज़ात है. Never get disappointed कि जी क्या बनेगा मेरा आगे. Life जो है, it's beautiful. The beautiful part of the life is it has different difficult experiences for you people. आपको जिंदगी में बहुत सी चीजें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बहुत सी चीजों पे सब्र करना पड़ता है, और 90% चीजें आपको करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप में ये तीन चीजें नहीं होंगी तो कोई भी फेलियर, कोई भी ड्रॉबैक ऑफ योर लाइफ आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, विच इज अगेन नेगेटिविटी. और वंस द नेगेटिविटी प्रिवेल्स इनसाइड योरसेल्फ, then you are no more. Then every day you are going into a depth. So it is very dangerous for everybody to understand this thing, that staying positive inside yourself is very important. अगर आप अंदर से खुद ही खत्म हो जाएंगे तो the team you are leading or the people you are surrounding, even if you have a peon in your team who is just giving you the pencil and the paper, or just give, by like um, kitting you with the water and other things. So you have to incur that part as well, that person as well. आपने उसको भी make that person feel that you are important in this project as well. So never discourage the team you have. This is very important. अगर even if you seeing your leader is not that capable enough कि वो आपको टीम में अच्छी तरह से लीड कर रहा है, तो you take the charge silently. Do not like it happens कि sometimes आपके 10 लोगों में से जो होते हैं, दो ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी उनके अंदर they need to लैंग्वेज होती है उनके, sometimes their working style में नेगेटिविटी होती है. तो आपने उसको भी देखना होता है और उसको समटाइम्स ओवरलुक करना होता है. और जो टीम मेट्स जो आपके से जूनियर हैं, या समटाइम्स आप, जरूरी नहीं है कि मैं, फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर. समटाइम्स यू हैव better brain than the person who's leading or who's sometimes more experienced. Experience is just a word. I don't think so it as, because every day the life is changing and the life is never on repetition. So every day you are encountering a new thing, you have a new heartbeat, you have everything new. So nothing is being repeated. Experiences, once you have the repetition, there is no repetition in your life. Every time you are facing the new problems, new dilemmas, new weather, new day. So you have to prepare yourself to the latest situation. That is the very important thing in your life. If you have prepared well, or like staying positive in any day, like we have to work in this day, we have to accomplish something in this day. That is one beautiful aspect of your life. That is one recovery from the failure as well. Coming back to about my own story in this way, being a lawyer, it was never easy to be a successful, because always the people are in the field, or though the clients you have, they always focus on the successful people or the lawyers who have already achieved, you can say, the name, and they're already famous regardless of their working capabilities. Because when I started, maybe I have the new ideas, I had at that time the new way of executing any case, or you can see that one. But the problem was your clientele, there was no clientele with me. So I have to definitely be dependent on the, you can say, the seniors cases, or the on dependent, you can say, on the seniors, that I need some work. So but इसका ये मतलब नहीं था कि मैं अपने आप को डिस्करेज कर लेता, या मैं बिल्कुल ही मायूस होकर बैठ जाता कि आप क्या करूँगा और आप कैसे लाइफ में आगे किया जाए. So you have to keep yourself charging. और इंसान का जिस तरह एक मोबाइल फोन को इट नीड्स अ चार्जर, सो इंसान का सबसे बड़ा चार्जर वो खुद है. और अगर वो अपने आप को खुद चार्ज नहीं कर सकता तो वो किसी और की, यू कैन से, कि कहने से वो थोड़ा सा तो मोटिवेट हो जाएगा लेकिन चार्ज नहीं कर पाएगा. So keep yourself charged always in any case. Or then coming to the topic in this way, recoveries आपको हर टाइम पे you must know the recoveries method of yourself. कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे जिसके ऊपर रिकवरीज नीड है, की जरूरत है.
Health is very important for you. Uh, do focus on your health. Always focus on your health. If there is any problem, your minor, uh, little minor CB, if you are encountering, focus on that one. Never ignore. And I'm saying these things because these all irrelevant things are relevant to your success. These are the elements part of your success. If you get sick during any project, definitely it will be a disaster, or you are like the main architect of any building design, or you're the main civil engineer of any building design, and suddenly the life or the disease hits you in, not in the major disease, and small in aspect, like you're overlooking your pain, and you're overlooking your small maybe flu, or so you have to have those things in your life, in your mind as well, कि हमने इनके ऊपर भी फोकस करना है, और इसको बिकॉज अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे साथ जो टीम है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, डिस्पाइट कि मैं उस टीम से सेपरेट हो रहा हूँ, अपने आप को डीलिंक कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर मैं उसमें लिंक में भी रहता हूँ तो हो सकता है कि 10 लोग और बीमार हो जाएं, और जो चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव ना हो पाए. सो हेल्थ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. देन मूविंग ऑन इन योर लाइफ, अपने अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करना होता है. अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जिस क्लाइंट से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली यू पीपल आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर और मे बी द प्राइवेट सेक्टर एज वेल. नेस्पा क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है मोस्टली, या डिजाइन से रिलेटेड इदारा है, तो you have tens of opinions always, like encountering your opinion. So the thing is that always have a listening mind. You listen to them, then convince them. And there is a word in Quran, um, it is right in the middle of the Quran in Surah Kaf, waliyatalattaf. इसका मतलब है, इसकी एक दो जगह यूज हुआ है. एक जगह और हजरत मूसा को अल्लाह मियां ने कहा कि निहायत, इसका मतलब है निहायत नरमी से बात करना. सो हजरत अल्लाह मियां ने हजरत मूसा को कहा कि निहायत नरमी से बात करो. क्यों कहा? क्योंकि when you talk in a positive or in a soft way, the other person listens to you. This is very important. Mostly we adopt a very harsh attitude towards maybe sometimes those who are seniors. If somebody is getting harsh, be silent, have some patience, let the guy, maybe he's encountering with some psychological problem at home, or बीवी से लड़ के आया हो, or maybe some other problem. So आप लोगों ने उसको encounter करना है with the patience, with you can say giving him a chance कि शायद इसकी आज कोई there must be some other reason. हो सकता है वो गाड़ी किसी के अंदर मार के आया हो, या उसको किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या आजकल तो वैसे ही आपकी बिजली चली जाए तो उस पर मूड ऑफ हो जाता है. सो आपने अगले बंदे को इतना मार्जिन देना है when you are interacting with the clients or interacting within yourself or the team, कि हमें पेशेंस की जरूरत है. everybody needs patience. और the best part of your life कि आप खुश इसलूबी से, इखलाक, we've been always taught by our religion as well कि इखलाक क्या है? to be good with each other. अपने आप से सब अच्छी तरीके से डील कर रहे थे हम. डेफिनेटली आप चाहोगे कि हमेशा सबसे अच्छी चीज जो है वो मैं अपने लिए सिलेक्ट करूं, बट वंस यू स्टार्ट गिविंग द बेस्ट थिंग टू द अदर्स, you achieve the best for yourself indirectly. If I have a good servant in my house, or if I have a good team within my, you can say, scope of work, and like in my office or in my whatever I am doing, so if I have the best team and the best people in this way, it is actually indirectly giving comfort to myself. It is not giving comfort to other person. They are getting paid for this thing. They are getting, also they are indirectly getting benefit out of that one as well. But actually you are also getting benefit out of that one. It is giving comfort to yourself. And one thing which I want you to make other people realize, whosoever working, is that in any project, like, it's good for you as well. If I am getting benefit out of it, if I am achieving some success of this project or anything which you people are doing, or if I am doing, so I have to tell them, you will definitely be having a share of that success as well. If I get, or if I
आई जस्ट मैं फेल हो जाता हूँ इन दिस प्रोजेक्ट में, तो इसका नुकसान भी तुम्हें होगा. यू हैव टू मेक पीपल रियलाइज दिस थिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बातें अपने आप से कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी टीम को नहीं बताते. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर इसमें नाकामी हो गई या इसमें हम कामयाब ना हुए, तो इसका इम्पैक्ट एक पीएन से लेकर टू द मेन टीम लीडर तक जाएगा. क्योंकि डेफिनेटली इफ यू लॉस्ट एनी प्रोजेक्ट और यू विल बी आउट ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल लॉस तो होगा, टाइम लॉस भी होगा. उस फाइनेंशियल लॉस का इम्पैक्ट जो है वो नीचे तक जाएगा, हर बंदे पे जाएगा. सो यू हैव टू मेक देम रियलाइज दिस थिंग. हमने इसको एट एनी कॉस्ट, वो खालिद मजीद ने कहा था ना, बर्न द बोट्स, उसका मतलब ये था कि हमारे पास और चॉइस नहीं है. हमने इसको हर इन एनी केस विद प्लान A B C D E, हर प्लान के मुताबिक जो भी हमारे पास प्लान हैं, हमने उसको कामयाब करना है. और जब इस सोच के ऊपर नहीं आएंगे, तो आपके लिए रिकवर करना मुश्किल होगा. इंसान गिर जाता है, गिर के संभलना जो है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. चीजें आ जाती हैं, चीजें समटाइम्स हम नेचुरल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. समटाइम्स आप कोई ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर जल्जला आ जाता है, बिल्डिंग collapse कर जाती है, दैट वाज नॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है. क्योंकि वो हम जल्जले की इंटेंसिटी को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हम एक गाड़ी को तो उसकी पार्किंग लेवल पे, लेट्स सपोज इफ वी आर मेकिंग अ बेसमेंट, और या हम एक फ्लोर डिजाइन कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर वर्कलोड और पर्सनल लोड और उसके ऊपर एक किस्म का जो पे लोड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन हम नेचुरल डिजास्टर और को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो उसका हम कर क्या सकते हैं? हम नेक्स्ट टाइम जो बिल्डिंग डिजाइन करें, हम उस लास्ट इंटेंसिटी को नोट करें कि लेट्स सपोज जो हमने लेट्स सपोज अगर अर्थक्वेक आया है और ये 5+ रिचर स्केल पे था, तो नेक्स्ट टाइम द बिल्डिंग हमने जो डिजाइन करनी है, जो एरिया में डिजाइन करनी है, हमें उस 6 को टच करना है. क्योंकि यहाँ पे बेस लाइन ये है, हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में रहना नहीं चाहिए. भूलना इस वजह से नहीं चाहिए कि इट विल कनेक्ट यू टू द बेटरमेंट. आपको बैकग्राउंड पता होगा कि हम कहाँ पे फेल हुए, कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आई, और कहाँ पे हमने किस चीज को हमने निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, जो कि इम्पोर्टेंट थी, और विच कॉजेज अस टू दिस फेलियर. उसको हिस्ट्री को याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें रह जाना इज नॉट, इट इज बैड. कि वंस यू स्टे इन द हिस्ट्री, फिर आप जो फ्यूचर है या जो आप एक आगे रिकवर करना चाह रहे हो, उसमें कभी भी रिकवरीज में नहीं आओगे. हम इंसान की हर लाइफ में फेलियर्स आती हैं, इस पार्ट ऑफ लाइफ. कोई बात नहीं, आ गई फेलियर. बहुत से लोग सक्सेसफुल होते हैं इन अदर फील्ड, बट दे आर नॉट मे बी सक्सेसफुल इन देयर फैमिली रिलेशन, मे बी दे आर नॉट सक्सेसफुल in their like if I'm not a good cook at all, okay, so I'm not the one who is always criticizing the food, because I'm not a good cook. So I should be rather more encouraging towards the one who's cooking for me, because he is spending his time, he's spending money as well, he's spending his energy as well. So I can only identify that okay, this can be done in the better way. इसमें अगर इस इंग्रेडिएंट में नमक कम है, तो हमें इसको इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन हमें इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए. दिस इज वन, यू कैन से दिस important part of the journey to recover from the failures. Coming again to um, the topics in this way, हमारे यहाँ जो मोस्ट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम विच वी एनकाउंटर इन आवर लाइफ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वी आर नॉट द गुड ऑब्जर्वेंट. हम चीजों को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते, हम मोस्टली चीजों को इग्नोर कर देते हैं. हमें इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं कि अगर हमें लेट्स सपोज हम गाड़ी की चाबी घर में खो गई है, तो हमारा एटीट्यूड जो नॉर्मल हम प्रैक्टिस करते हैं इन दिस, हम अपने सोशल सेटअप को देखते हुए, हम पहले लोगों को डांटेंगे या सर्विस को डांटेंगे, फिर गालियां भी दे देंगे, और उसके बाद फिर हम दुआ मांगेंगे, और थर्ड पे जाके हम कहेंगे कि लेट्स, कि हमें आया कहाँ था, मैं कमरे में किस जगह पे आया था. तो हमारा अप्रोच टुवर्ड्स एनी फेलियर ही, एनी प्रोजेक्ट ही फेलियर की तरफ है. वन शुड बी अडॉप्टिंग फर्स्ट
कि मैं आया कहाँ पे था और मैं किस कमरे में गया था और कैसे मैंने किससे चाबी रख दी। देन कम टूवर्ड्स द दुआ और अदर थिंग्स एंड देन यू गो फॉर द लास्ट वन, कि अगर आप किसी को पूछो कि भाई तुम इधर आए थे या तुमने तो नहीं देखी, हम पहले ही उस बंदे पे बरसना शुरू कर देते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम, क्योंकि इजी एस्केप है, नेवर गो फॉर द इजी एस्केप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम मोस्टली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें फेयर है, कम आउट ऑफ दिस फेयर। हम मोस्टली वी आर, हर चीज के ऊपर हमें फेयर है क्योंकि द सोसाइटी वी आर लिविंग, वी आर born with the fears, unfortunately. This never happens in European societies or in any of the, you can say, the developed countries society. They always encourage, even from the day one, from their to their kids, they, the first part they do is encouragement. हमें तो पहले दिन से स्कूल के बारे में डरा दिया जाता है कि if I tell you honestly, शायद मेरी कजन्स वगैरह अगर वो, स्पेशली द फीमेल कजन, अगर वो इतने नंबर ना लेती तो शायद मैं भी ना पढ़ता। इस रियलिटी, क्योंकि डे वन से एक फियर फैक्टर जेन में जो है ना वो डाल दिया गया। एंड द पीपल प्ले विद द माइंड, पीपल प्ले विद द फियर फैक्टर ऑफ योर लाइफ। फियर फैक्टर जो है इसको अनलेस एंड अनटिल एलिमिनेट नहीं करेंगे, अगर आप पानी में उतरने का फियर रखते रहेंगे तो आप डूब जाएंगे, डेफिनेटली डूब जाएंगे। सो आपको फर्स्ट चीज, जो चीज ओवरकम करनी है वो फियर फैक्टर है, और जो फियर फैक्टर है वो फेलियर का फियर फैक्टर है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहली चीज ही जेन में रख ली कि हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, मे बी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और मे बी हमारे पास 10 अदर कॉम्पिटिटर्स हैं और वो हमें डेफिनेटली हमें हरा देंगे या हमें इस प्रोजेक्ट की बिड से या किसी तरीके से आउट कर देंगे, तो आपने तो पहले ही एक फियर फैक्टर को पार लिया। गो इनटू प्रोजेक्ट, बिड दैट वन, पुट योर गिव योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेट्स सी कि वो कितने कैपेबल है। समटाइम्स इट हैपेंस कि वो किसी एक पॉइंट की वजह से रह जाते हैं। समटाइम्स, most of the time I have seen, once you are into any project and you are doing your best and you are into any bid with all the preparation, ऐसा होता है कि अगले बंदे की तरफ से कोई ना कोई एक पॉइंट रह जाता है, and which is where you are prepared despite the number third or fourth, but that element is only with you. So keep always that element, and that element is the fear factor. Most of the time we are encountering with the fear factor. हम एक, इन अदर वर्ड्स का, हम सफर करने से पहले ही फेयर फैक्टर में चले जाते हैं कि रोड ब्लॉक होगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, टोल बढ़ गया है, ये हो गया, तो आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे अगर आपने फियर फैक्टर को पहले ही डाल लिया। हो सकता है कि आप रोड पे घर से बाहर तो निकलो, जब घर से बाहर निकलो मे बी somebody is ready to give you an एयरलाइन टिकट कि आओ जी इस पे चले, तो आपको तो जर्नी ही आधे मिनट में, वो आधे घंटे में कवर हो गया। So remove this fear factor, come out of your cage. Mostly हम लोगों ने अपना केज अपने खुद ही बनाया है, उसकी वजह से हम रिकवर नहीं कर पाते। जब अराउंड ये केज, ये चीजें खत्म नहीं, आप कभी भी रिकवरीज की तरफ नहीं आएंगे। और के बाद एक और फेज ऑफ लाइफ है, रिकवरीज के बाद जो है, that phase is again very important. Be humble after you recover, क्योंकि most of the people हैं जब वो once they achieve all this, Quran says as well, अल्लाह में कुरान में कहता है कि जब मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ तो तुम उल्टे सीधे हर लम्हे मुझे याद करते हो, और जब मैं तुम्हें इससे चीज से निकाल लेता हूँ तो फिर तुम लोग कहते हो ये तो मेरा ही कमाल है। सो इंसान का कमाल नहीं है। आफ्टर रिकवरी you have to be humble. आप ये ना बोलें कि इसको अचीव करने में कितनी एफर्ट्स लगी, कितने स्लीपलेस नाइट्स थी, कितने दिन थे जो कि हम फारिग बैठे रहे और उसके ऊपर काम करते रहे। सो उसके बाद का प्रोजेक्ट, जब रिकवर करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ है वो बी हम्बल। आप ये ना शुरू कर दें कि मोस्टली यू स्टार्ट टॉन्टिंग ऑन अदर्स, यू स्टार्ट बिलीविंग कि जी ओके मैं इनविंसिबल हो गया हूँ, या अब जो मैंने व्हाट आई हैव अचीव्ड नोबडी कैन अचीव। द लाइफ, ये दुनिया की खूबसूरती ये है कि हर लम्हे कोई ना कोई नई
आपको रिप्लेसमेंट आ रही है। तो रिप्लेसमेंट किस वक्त होती है? रिप्लेसमेंट उस वक्त होती है वंस यू डिसाइड और वंस यू थिंक स्टार्ट थिंकिंग दिस थिंग दैट यू आर इनविंसिबल, you are the best one, nobody can replace you. The moment you start thinking this one, immediately the replacement is there. It is nature's rule. Once you start thinking for this kind of attitude after you recover from the failure, you will definitely be having this problem of not being humble. So मोस्टली आपको जो सक्सेस आफ्टर रिकवरीज होती है या सक्सेस आफ्टर फेलियर जो होता है वो आपको प्राउड कर देता है। ये इससे बचना भी बहुत जरूरी है क्योंकि द लाइफ नेवर स्टॉप्स. Some people are the more good people are coming because every day the new kid is born, a new kid is born. So once he will be into the field, he will be having a new ideas, better ideas. Another thing which I want you to adopt in your life, जिस तरह हम if I'm using an iPhone तो उसका हर कुछ टाइम के बाद उसके सिस्टम अपडेट्स आ जाती हैं, न्यू iOS सिस्टम आ जाता है. वो iOS सिस्टम क्या है लाइफ में? iOS सिस्टम बेसिकली आपके, वी आर लिविंग वन लाइफ एंड द सिस्टम्स इज कीप ऑन अपग्रेडिंग. तो अगर आप अपने you being not keeping yourself compatible with the system or with the upgradations of the life you are encountering, so definitely you will be hitting another failure, and then recoveries mode is never be available for you. Because पहले जिस तरह हम जिंदगी में टेलीफोन जो था वो with the cord होता था और एक टेलीफोन होता था. Now everybody is holding the smartphones in your life, and smartphones they definitely be having the upgrades. और जहाँ पहले डेस्कटॉप होता था, फिर लैपटॉप हो गया, लैपटॉप से आईपैड पे आप चले गए हैं, एंड मे बी समडे आपका ऑलमोस्ट अब तो फोन ही सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन सम अदर डे सम रिस्ट बैंड आ जाए, आई वॉच आ गई है. सो अगर आप इन चीजों से अपने आप को कंपेटेबल नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. वंस यू आर आउट ऑफ द मार्केट it means it's a failure of you. So you have to keep yourself upgraded as well with the latest system, with the latest technology. Keep yourself well informed about what's happening. Just come out of your shell, just go outside, just see what people are doing, what people are introducing to the new world, what they have invented, what they have discovered. This is a very important thing in your life. We all people are, even myself, because I deal with aviation law, and I keep on studying, I keep on seeing what new inventions are there in air aviation sector. What the new supersonic, there is a hybrid supersonic plane is coming, which might be covering the distance between Tokyo and New York in just 2 hours. It's like it's beyond imagination, but definitely that will happen one day. And because पहले transatlantic flight was थी 16 hours, then आपका Concorde आया, and it's very less in number at that, less in time in this way. So ठीक है, उसके बाद Concorde disaster हो गया, लेकिन they are still working on this. Concorde के disaster का मतलब ये नहीं कि they have cancelled all the aviation industry, they have stopped down any innovation into aviation industry. They are building the new planes, they are making supersonic, the hyper supersonic plane, which is, you can say, next generation of Concorde. So if they haven't interacted or countered with the failure of Concorde, they never have this new technology, which is a supersonic technology. So the thing is that you अपने आप को innovation में, नई चीजों में अपने आप को अपग्रेड करना है in your life. It keeps on, because हर नया बच्चा जो आपके आ रहा है, जो add on to the system हो रहा है, he has a new idea, he has a new things, और आपने उनको encourage करना है, उनको accept करना है. हम एक मसला हमारे साथ ये भी है कि हम जो नया, mostly the new younger generation जो even into my field जब वो आती है, तो हम mostly उनको encourage नहीं करते, या उनके ideas के साथ हम लड़ना शुरू कर देते हैं. That is not the way. We do not need to fight with them. We need to accept their ideas. Maybe it is much better, or maybe they have studied something
new or they have the genius brain behind that idea. So we have to accept that one, mostly the seniors ones especially, and हम accept नहीं करते, हम कहते हैं जी कि नहीं, our way was the better way. It's never the better way. The new coming generation is always the better, because he is coming with a fresh brain. It's just like a fresh fruit of the season. It's not like the old rotten ones, despite they have their own values. But the new blood is on the new generation, the new idea is uh, new. Rather I said the new idea. New idea means with a fresh brain. Fresh brain होना बहुत जरूरी है हर प्रोजेक्ट में, हर चीजों में. और जो बंदा भी फ्रेश ब्रेन का है, स्पेशली टू द सीनियर्स, उसको उसको सुने, उसको एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करें. मे बी दैट आइडिया इज बेटर देन, और better than the older one. Then coming to again to the field of in this way, human psyche को समझना बहुत जरूरी है, because you people are interacting with the government sector or with the human, you can say projects जो हैं construction projects हैं, or that is backed by the human ideas and things like that. So आपको human psyche समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर आप ह्यूमन साइकी नहीं समझेंगे तो वो इट्स लाइक इट्स गिविंग यू द एग्जांपल इन लेमन्स लैंग्वेज. इट्स जस्ट लाइक कुक. अगर आपका कुक आपके टेस्ट को नहीं समझेगा तो वो कभी भी अच्छा खाना नहीं बना सकेगा. वो हमेशा चीनी ज्यादा कर देगा मीठे में, या नमक कम कर देगा, या नमक ज्यादा कर देगा, या मिर्ची ज्यादा कर देगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बिकॉज यू बीइंग क्रिएटिविटी की तरफ है, तो जो लोग आपसे जिनके साथ आप इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी साइकी को समझें. अगर आप उनकी साइकी को नहीं समझेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनसे डील करना, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे. तो जब दोनों एंटी डायरेक्शन जा रहे होंगे तो देयर इज नो अचीवमेंट. यू आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, टू अनदर फेलियर. So to achieve what you have targeted in your mind, you need to identify the psyche of the people, what he needs, what he is looking for, what his idea is for this thing. Then you put your own idea into that one. For that you need to have good listening power, you need to have calmness in yourself, you have to be patient. हम aggressive हो जाते हैं अपनी डिस्कशंस में, हम aggressive हो जाते हैं अपने dialogue में. Starting from just keep looking into your home, we just flare up हो जाते हैं for nothing. Although why there is a difference between every one successful person and another you can one failed person, because this जो successful person होता है वो calmly सुनता है, वो उस फेलियर में से एक सक्सेस को निकालता है, क्योंकि वो देखता है कि शायद कहीं पे ऐसी चीज थी जो कि मैंने ओवरलुक की, जो मुझे ओवरलुक नहीं करनी चाहिए थी. जबकि जो जो लोग इसके ऊपर यू कैन से रिपीटेडली एक किस्म का क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो कि से वो दे आर ऑलवेज ब्लेमिंग. सो स्टॉप यूजिंग दिस ब्लेम गेम. ओके, खराब हो गई चीज, ओके लेट्स डू इट अगेन, let's change it, let's change the way. So that is the way you recover. Unless and until अगर आपने उसको पिटना ही है या उस नाकामी को ही repeatedly ताने में इसको एक किस्म का टॉन्ट कर लेना है, तो इवन द सीनियर्स अगर वो किसी जूनियर से कोई गलती होगी, उसको टॉन्टिंग वे में उसको उस प्रोजेक्ट को फेलियर को करेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी चीज नहीं लेके आएगा. उसके अंदर एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाएगा. जो फियर फैक्टर डेवलप हो गया तो फिर तो इस वेरी इजीली प्रेडिक्टेबल कि आप अनदर फेलियर आप यू आर एनकाउंटरिंग. सो यू हैव टू इंकरेज योरसेल्फ कि जी मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, मैंने इसको कहाँ पे इस नाकामी को बैलेंस आउट करना है. ठीक है, होती हैं, हो जाती हैं चीजें, गलत हो जाती हैं. आप समटाइम्स एक अच्छा ड्राइवर से भी गाड़ी लग जाती है. उसकी ये वजह नहीं कि वो ड्राइवर अच्छा नहीं था, उसकी ये वजह है कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता. जैसे आजकल जितनी गाड़ियां लेट्स सपोज इन दिस वे वो लेटेस्ट आ गई हैं, दे हैव ऑटो ब्रेक्स, दे हैव रडार्स इन देयर
you can say in their in the bumpers or for auto वो उसमें क्या कहते हैं speed जो है controlled है. Then they have sensor cameras, they have multiple gadgets in it. So it's more like a computer car than a man controlled car. So the person who is driving for last 10 years, he's driving the manual car. Now the cars are completely automatic with the new gadgets in the even the push button start. पुश बटन स्टार्ट की अगर बैटरी डेड हो जाती है तो आप क्या करोगे? धक्का मारोगे, धक्के से तो वो स्टार्ट नहीं होगी, आपका तो फिर ब्रेन ही नहीं है. सो व्हाट यू need to, you have definitely be needing a jumper cable for that to restart that car. And you cannot say that the driver is poor, he's an idiot. You cannot say that. He's a driver, he is driving perfectly, but the problem where he counter was he was never himself encountered with the new technology. He never upgraded himself with the new technology. Like उसने कभी पुश बटन स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट नहीं की, उसने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी में भी अब इवन जो गेयर नॉब्स जो हैं वो बटन पे चली गई हैं. सो उसने कभी वो बटन्स देखे ही नहीं, उसने तो हमेशा जो गेयर स्टिक देखी है. सो उसके लिए वो ठीक है, ही इज अ गुड ड्राइवर, बट उसके लिए वो टेक्नोलॉजी से वो नहीं, यू कैन से इतना ज्यादा आशना नहीं है. इज नॉट familiar with the technology. So what he is doing, he will definitely be hitting the car. So it's the damage, it's a loss. So now how? Okay, fine, he hit the car. Now what's next? You have the two choices: either replace that driver with a younger one who is with the interaction or the new technology oriented person, or the new driver who knows the new car. Or second, you just get that old guy trained for the new car. He will be definitely be sharing. So for younger ones, I just suggest them to learn from the seniors, the failures they encountered in their lives, by listening them. It's not once you we most of the people we are seeing the successful person, what they have achieved. They're not watching the recovery periods. They're not watching the failures. They're not watching the sleepless nights and things like that. So you have to see, you have to listen, you have to see the failures they encountered in their lives to achieve one success. एक शहद की मक्खी जो है वो एक ऑन्स का जो शहद बनाने के लिए वो कोई 5,000 फूलों पे जाती है, फिर जाके एक छोटा सा कतरा शहद का बनता है. सो आपने इन चीजों को देखना है. एंड टू द सीनियर्स, जो नया है आप उसको 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 सुने, उसको देखें कि ये हमारे जहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ ये क्या वजह थी जो कि जो बायस बनी. सो यू कैन लर्न फ्रॉम the or younger ones, and the younger ones can learn from the experience or the history of the older ones. This is the one way you can recover. You can recover to the to any of the failure. So come out of this fear factor of getting failed. Human being failed. कोई गधा घोड़ा नहीं फेल होता. वो उनको ना वो, क्योंकि इंसान को ही अशरफुल मखलूकात बनाया गया, और अशरफुल मखलूकात क्यों किस बेसिस पे बनाया गया है कि वो रिकवर पे जाता है, वो गुनाह करता है, उसके बाद माफी मांगता है और फिर नए सही रास्ते पे चलने के लिए पॉजिटिव रहता है. और वो उसको उस गुनाह को याद रखता है कि मेरे से गलती हो गई थी और उसको मैंने अब करेक्ट करना है विद डूइंग गुड डीड्स विद, क्योंकि अल्लाह मैंने कुरान में कहा कि मैं तुम्हारे अमाल, बुरे अमाल तुम्हारे अच्छे अमाल से रिप्लेस कर दूंगा इफ यू डू द गुड थिंग्स. सो यू हैव योर रिकवरी विद इन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं. एंड it's always success is always there for you. So any questions, anything, guys? Howard, are you there? Yes, sir, I'm here, sir. Ji. So guys, any questions, any problems you can want to have with me or any? Yeah. So
There's somebody asked, his name is Atif Naveed. So he asked the unavoidable legislative approval delays. आपने जिंदगी में इन चीजों को भी ज़हन में रखना है। जब आप कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं तो आपने हर फैक्टर को रखना होता है, जिसमें फाइनेंशियल फैक्टर भी आ जाता है। I shouldn't be using this word, but it's a reality. Sometimes आपने जो idiotic delays हैं from the legislation, you can say part, उसको भी आपने ज़हन में रखना होता है हर clients में, and you make other person understand that one. Agar if you see that person is not listening to you, you just leave that part, that okay, my part is to construct that building, not to get it approved. If you take that, if you are relying on myself for get that thing approved, so you just ask them, okay, then I have to adopt my way of doing that one. If you want that the things, my job is to construct or to design, this is my part. My part is not to get it approved. I will be doing everything which is required for approval. But if you want me that I should get it approved, that is not my expertise. I will definitely be hiring an expert team for getting it approved from the relevant agencies, or you can say the government offices. But they have their own ways of getting it approved. My part is, if I will be sending documents or things for that approval, that will be met. That will be definitely be met by myself. But which is not in my control, do not take the responsibility of which is not your responsibility or which is not in your control. If the rain comes, that is not in your control. So similarly, construct in, like you're designing or constructing, that is in your control. Or you're making a building, or you're completing a building, that is in your control. But getting it approved, which is another department, which is another field of life, do not take responsibilities of other person's job. If, again, giving you the example of your cook, if you are not a cook, okay, if you are making a food yourself and the guest is there at your home, you can better say that, okay, I have two choices. Either I can order it from outside, one thing. Second, if you want me to cook that one, any food, so it will be as my way of it will not be as you want, or as a professional cook can be doing that one. So you can ask whosoever your client is, define your role, define your part. This is my part, and this is not relevant to my part. This part is to be controlled by the other person, and that person you have to deal it either separately. And if I am dealing with that person, so I will be definitely be having this delay margin always in my mind, because that is not in my control. So what is not in your control, do not take the responsibility of that part. Always take responsibility of your part and do that one, or complete that one in a victorious way. That is what I can suggest you in this way. G, anyone else? G, any questions, guys? Anything you want to ask? So guys, you there, or G, Howard? I think people need, I want them to ask questions. They should at least have the fears in their minds for not asking questions. Ask questions. Let's discuss the problems you encounter. We all encounter the problems from we all. लेकिन सर कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, इसलिए जो है ना वो आप I think the two reasons, they are still in hibernation mode, or because if you are alive and active, you definitely be countering the problems. So I want people to speak up, ask questions, ask things.
Be inquisitive. Keep asking questions. Keep asking things. Because if you're not asking questions, if you're not asking or not sharing your own experience of the failure, so you are again into another depth. G. G, how is there any way one? G. अगर कोई जो है ना वो रिस्पॉन्स इस तरह से तो नहीं आ रहा, नोबडी इज रेजिंग हैंड्स कि क्वेश्चन आए इस तरह से कोई तो ये आप ही को लीड करना है जैसे भी आप मुनासिब समझें। चलिए मैं एक फिर थोड़ा सा इसको टॉपिक और मॉडिफाई कर देते हैं। एक जो मैंने बात आपको स्टार्ट में की थी कि आई विल गिव यू द टिप ऑफ लाइफ टिप of any to make any project successful. So that is a very relevant one in your life. If you want to make any project, just make आप अल्लाह मियाँ को अपने प्रोजेक्ट में पार्टनर बना लें, ठीक है? That is the one tip of your for the life, ठीक है? You have you just share and partner कैसे बनाएंगे? Success, share the success with the people you are having maybe in your home, from maybe your servant, an ordinary servant in your home, from your driver, and the maximum you can go up to the boss. So अगर आप अपने सक्सेस में अपने रब को शामिल कर लेंगे, रब को शामिल करने का तरीका क्या है? Whatever you achieve, you share it with your people around you. So आपका प्रोजेक्ट आप but be just make this part from the beginning of the project, not making it conditional that in the end you will be making it. Make this thing the very first. Once you conceive any project, you just have in your mind that I will be sharing the profits, the success of this project with my Allah. So that will make that any project successful. Whatever you're thinking in your life, even going for anything, for any journey, for anything, just make your Rabb and अब अल्लाह को कैसे उसमें शामिल करेंगे? Because whatever you achieve in terms of profits, maybe financial profits, maybe आप sometimes आप उसको जरूरी नहीं कि आपके हर दफा आप फाइनेंशियल गेन्स पे ही आए, हो सकता है आपको सेंस ऑफ एनकरेजमेंट मिले, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिले। उस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन को आप किस तरह शेयर करेंगे? with your good mood, with your good gesture, with your subordinates, with your and subordinates include even the gardener at your home. You just shift that good mood to them because this is success. And if you think that one in the beginning before conceiving or perceiving any project, I assure you, you will definitely be hitting the success. This is the one tip I want to give all of you. This is like I don't want, it's a secret, but still you must have, because I don't know what kind of recipients we have over here and what age group they are into. For maybe a number of the participants in this conversation, and they might be adopting the same procedure, but this is the very important. आप रब को अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लें स्टार्ट से, ठीक है? और शामिल करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वो ज़हन में कर लें, उस सक्सेस को शेयर करना है आपने जो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के पे आए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ financial हो, in terms of appreciation हो, you have to success that one. There's a question from is that how to make success? Rafiq. So one thing I just want to make you understand, observation is one key to success. Quran says कि गौर करो,
वॉर कैसे करोगी जब यू जस्ट फोकस वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग इन योर लेफ्ट राइट वाइल ड्राइविंग इवन। आप अपनी गाड़ी को जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो कैसे बचाते हो? विथ ऑब्जर्वेशन कि एक स्टूपिड जो है वो गलत डायरेक्शन में आ रहा है और मैंने अपने आप को भी बचाना है और इस इडियट को भी बचाना है। सो ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। अगर आप अगर आप खुद भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे और वो तो एक बंदा जो रॉन्ग डायरेक्शन में वन वे को तोड़ता हुआ आ रहा है वो तो इडियट है ही है, और अगर आपने भी ऑब्जर्व नहीं किया तो आपने उससे डबल मिस्टेक कमिट की। सो ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। अनलेस and until you do not observe anything minor, do not overlook any minor mistakes or the minor observation. If you're getting experience, if you're having it uh, from anyone, maybe sometimes the person who is not directly or indirectly or related to you, he can give you the tip, he can give you some kind of observation he might have observed somewhere else. So always observe that attitude, always see that one, always uh, give importance to the observation and keep your eyes open, because ये दुनिया ऐसी है, अगर जिस लम्हे आप अपनी आंखें थोड़ी सी भी डाउन करेंगे इट विल हिट यू इमीडिएटली। सो आपने अपनी आंखें जब तक जिंदा है खुली रखनी है, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब यही कि यू आर रेडी टू एनकाउंटर और काउंटर एनी प्रॉब्लम। You see, you will be encountering problems, you will be encountering failures, but you need to have the observation how any other person came out of this one. There's a two like, let's suppose खुदा ना करे कोई भी डिप्रेशन में चला जाए after any failure. There's a one guy who went into depression and he शायद वो खुदकुशी कमिट कर ले, ठीक है, वो सुसाइड कर ले। और देयर इज अनदर पर्सन जो कि अपने आप को रीअलाइन करे एंड वो दोबारा अपने आप को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करे। सो दोनों की ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन अपनी ओपन रख सकते हैं कि यार एक बंदे ने इसमें डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद अपने आप को खत्म कर लिया, एंड द अदर पर्सन यू ऑब्जर्व कि दैट उसने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा रेज किया विद बेटर आइडियाज एंड टीम एंड एवरीथिंग। वो उस पे और उसी को उसने सक्सेसफुल किया। सो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर आई ऑलवेज रेडी टू ऑब्जर्व एनीथिंग, do not ignore anything, like even from a small kid, from maybe a toddler in your house can make you learn something, can make you see okay, how it can be done, how this so once you keep your eye open you definitely be having solution for the problem. So this is what I suggest. And on decision, successful decision, एक चीज आपको बताऊं जिंदगी में डिसीजंस जो है वो गलत नहीं होते, रिजल्ट्स गलत होते हैं। दिस इज माय बिलीफ। मोस्टली वी टेक द डिसीजंस थिंकिंग दैट इट विल बी राइट, ठीक है, बट रिजल्ट समटाइम्स एज आवर एक्सपेक्टेशन नहीं होते, क्योंकि हमने एक चीज अब टारगेट रखा होता है कि ये ऐसे होगा। या लेट्स सपोज हमने अगर लाहौर से इस्लामाबाद आना है एंड वी हैव everything ready, the car is ready, fuel is ready, even if you are carrying a driver, the driver is ready, everything is fine, but maybe आप इन बिटवीन रास्ते में पहुंचे तो पता चले कोई एक्सीडेंट की वजह से रोड ही बंद है। तो उसको आप कैसे एनकाउंटर करना है? उसको एनकाउंटर आप और तरीके से भी कर सकते हैं। आप उसका कोई और थोड़ा सा वापस जाके कोई और रास्ता अडॉप्ट करके आपने अगर इस्लामाबाद पहुंचना है तो आप जीटी रोड ले लें, कोई और रोड ले लें। लेकिन अगर आपने पहुंचना है और अगर आपने नहीं मूड के मैंने नहीं पहुंचना है तो फिर आप उसी वहां पे बैठे रहें जब तक कि वो रोड क्लियर ना हो, और फिर जाके आगे वो रोड चाहे कहें जी कि अब बंद कर दी गई है। लेकिन जब आपने कहा कि मैंने पहुंचना है तो यू हैव टू हैव ऑल्टरनेटिव्स। आप हो सकता है वहां से गाड़ी नीचे उतार के भी आगे दोबारा रोड पे ले आए कि जी मैंने पहुंचना है। सो यू हैव टू हैव मल्टीपल प्लान्स इन योर माइंड। Most again saying, come out of the fear factor. If you, unless and until you come, because fear is injected in ourselves
starting from, this is to every participant, I just want to say, for me, the successful businesses in the world which exist is the fear business. How it starts, हमें the day one से हमें जो पहली चीज हमें जो वो सिखाई जाती है वो fear सिखाई जाता है instead of encourage करने का. हमें अगर खाना भी खिलाया जाता है घर में, as a child when I was a kid, you can say the 4 or 5 years of age, तो हमें वो fear factor को देखते हुए सिखाया जाता था कि जी अगर खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कोई नहीं, किसी ने नहीं ये बताया कि खाना खाना is healthy for yourself. Everybody said, even I shouldn't be saying, but my mom said the same thing. उन्होंने कहा खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल कांगड़ी हो जाओगे. So instead of ये भी यूज किया जा सकता था कि जी खाना खाना जो है it's good for your health, it helps your bones, it develops your body. So your internal human body is a machinery. So every machine, mechanical part needs some energy or some fuel for that, and the food is fuel. So if you're not fueling your internal mechanics, so you definitely be hitting a disaster. But nobody said this thing. They always said कि तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, तुम्हें कोई healthy बच्चा या कोई मोटा बच्चा स्कूल में मारेगा. Then again in school हमें यही बताया गया कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे. ठीक है, nobody told us कि पढ़ना जो है it polishes your brain, it polishes your ideas, it polishes your observation, it encourages you towards the new things or in your life. अगर upgradations हैं so you must know, like after getting education for any subject, you know the difference between, like suppose a washroom and a kitchen and its use respectively. So nobody told us. They always told us कि अगर तुम्हारे cousin तुमसे आगे निकल रहे हैं, so it's a fear factor is always injected into us. So come out of this fear factor. There's a question from Ali that how do you hear success? Satisfaction is a success. You execute any project, and if you think that you are satisfied internally, it's a success for you. Do not make that. If somebody is, you can say, criticizing. If somebody is criticizing you, it means you have achieved something. Because normally जो लोग हैं वो कम जो लोग अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, it means कि you are heading towards a success. And what is success? This is the most important question for me. That what is success? Success is with any of the achievement, you make your surrounding part of it. You will never make anybody part of your failure. It's a human nature. You will never, if you have failed in something, it's just like you never ask anybody to be part of your losses, or if you have financial losses encountering. But if you are if you have achieved something, if you have the good money in your pocket, you definitely be asking even your family, your wife, your parents, your kids, okay, let's go and let's have, even you can say the amount can vary. Okay, you can say, ask, okay, if you can afford, you can go to Disneyland, or if you cannot afford, you can take them to the McDonald's for the ice cream. So that is success, the sharing of what we have achieved. If you have not ability to share, it means you have nothing achieved in your life. You have nothing, you are not successful. You always, once you are in position of sharing what you have achieved, you have achieved the success. That is the success in your life. If you have not achieved anything, then you cannot share that one. So for me, success is once you are in position to share. Go ahead, guys. Anyone else? G. So there's another question from, I think I didn't answer that one, I get fun, but oh, well, for
लर्निंग कल्चर आजकल द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए वे लकी इनफ कि हमारा मीडियम बहुत वास्ट है, बहुत इजी है। लाइक अब ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। खैर फेसबुक फॉर मी इज एन ओल्ड थिंग, बट ट्विटर, इंस्टाग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Keep get yourself educated from the new gadgets, the new technology. अभी पहले दौर में जिस it was difficult for us to communicate to European or what they are doing. Now, even if any new model is coming, or even in any mechanics, or in any car, you can say, or any technology, or in any innovation in any drug, you can say, in terms of disease, if something is coming, you have an access to that information. That is the beauty of the recent this current era, that you have an access of what America is doing in America. Before, it was through the books, through the publication, and publication is always is like it takes time. The book is getting printed in America, it could it could take months, maybe years, to come into Pakistan. But now the technology is entirely different. Now you can have access what people are doing in America, in UK, even in any of other countries. And you can also have the comparison, the nations in Africa. You can have you can have information what successful nation is doing, what is the people in Africa, what they are doing, what is the failure behind that one. So you can have an idea, and that is the one learning culture you can develop. Just keep yourself updated from the good use of technology, not from the like I do not keep a TV in my room because it's useless for me. You're already, you have so many problems in your life, and you're just watching the TV in on the news channels, especially in Pakistan. It's better to watch something like Net Geo, or some BBC style, uh, which are into construction style, or they're giving you the new ideas, or something which encourages you, instead of the news channels. We do not need. I was once traveling with one of the flights, and somebody told me, guys, gentlemen, do not go for the newspaper. If there is something written in it, you already know that one. If something not written about you in this newspaper, it is not relevant to you. So go for the something which is um, useful information for you. So learning culture is within you. You have to develop, or sometimes you have to arrange things accordingly. You can use a TV to have the multiple channels are always available. Which channel you want to watch can build your learning culture. So what is the next question is from Ali, that what is a joint success? Well, look, well, what is a joint success? It is when you achieve something in your life, it has impact on the people. Giving you the simple example of myself, I tell to my 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 cook and my chef, or at home, कि यार मेरा खाना, मेरा नाश्ता टाइम पे मुझे दे दिया करो। क्योंकि अगर मैं टाइम पे चले जाऊंगा, तो जो मीटिंग मैंने अटेंड करनी है, या जिनसे मेरी पब्लिक डीलिंग है, या मेरा काम है, मैं वो टाइम से पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं घर से नाश्ता ही नहीं कर से टाइम पे करके जाऊंगा, तो मेरे डेफिनेटली भी एक फ्लॉ तो मैंने जिंदगी में पहले ही लेके जा रहा हूँ, कि मैंने एक चीज मिस की है। और जब मैंने एक चीज मिस की है, तो मैं सेकंड पार्ट में हो सकता है मैं फ्लेयर अप हो जाऊं ड्यू टू दैट वन रीजन। सो वंस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, सो डेफिनेटली भी अगर मैं घर से अच्छा नाश्ता करके गया हूँ, कपड़े सही तरीके से मेरे इस्त्री थे, मैं बिल्कुल रेडी होके गया हूँ, एंड डेफिनेटली भी आई विल बी हैविंग अ गुड मूड एट द मीटिंग एज वेल। और वो मीटिंग जो है, मुझे surely it will take me to the success, to the complete, we can say, achievement, or some kind of completion of any project. उस project से जो impact आएगा in terms of financial, I should be sharing that one, and that is a joint success. Right? You have to tell people, even if you're PN, if I'm PN in my office, in my home, if it's bringing water for me, and I'm not, because I can do that, I can bring that water for myself. But the thing is that I will be engaging myself in a micro things.
because my ultimate agenda is the macro things. So I got myself involved in the micro things, and I wasted the time, and that the time wastage leads me towards a failure, or towards something not achievable within the time limit. So I have to make that guy understand that if you are supporting me, you are the part of this success. Okay, so what I have achieved now, I will be sharing with you. I shall be sharing with you as well, because your effort was to give me water in time, to give me my clothes in time, to give my food prepared in time. So that is the one way of sharing the success, and then the joint success, that everybody has a role in your success. Never ignore. Even you need your mom, or you need your wife, you need your kids even to pray for you to be successful. That is also important, because they cannot make you drive the car unless and until they are also a driver. But if they are not a driver, but they can pray for you to make your journey successful or safe. So that is also a joint success. That is also, they are part of that journey as well, indirectly. So these are the elements one have to see around, that how to make part of the success everyone, and share it with them as well. Ji. Ji, anyone else? गाइस, एक चीज आपको मैंने स्टार्ट में गई थी, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने रात नहीं देखी ना, तो आपको दिन की इंपॉर्टेंस का नहीं पता. इन अदर वर्ड, अगर आपने मीठा नहीं चखा, तो आपको नमक का नहीं पता. ठीक है, क्योंकि आप जब तक आप फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको सक्सेस के इंपॉर्टेंस का नहीं पता चलेगा. सो मेरे नजदीक यू हैव टू हैव, अगर आप you want to be the most successful person in your life, definitely you will be encountering so many failures and so many ways of like many times you are so many times you are encountering with the failure. The Ali says there is no concept of success without failure. Yes, there is no concept of success without failure. This is one thing written, because as I said, अगर आपको रात अगर आपने नहीं देखी, तो आपको दिन का नहीं पता. ठीक है, आप जो लोग नॉर्वे में या उधर रहते हैं, जो जहाँ पे दिन ही 24 घंटे दिन होता है, उनको रात की इंपॉर्टेंस का नहीं पता. अगर आपने रात को एक्सपीरियंस किया है, तो फिर आपको दिन की इंपॉर्टेंस का पता है. अगर आपने बारिश को एक्सपीरियंस किया है, तो अगर आपने it depends. It depends that the more you fail, more you learn. Yes, you learn a lot, but if you have the learning abilities, this is the, बहुत से लोग फेलियर को सर पे सवार करके डिप्रेस हो जाते हैं और खत्म कर देते हैं जिंदगी को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने you maybe in a day you encounter hundreds of failure in a day. आप ड्राइव घर से निकले हो, लेट्स सपोज आप घर से निकले हो सकता है वो आप जैसे चाह रहे हो ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो रेड हो जाए, तो इस काइंड ऑफ फेलियर. मे बी हो सकता है रोड पे कोई बंदा वो एहतजाज हो रहा हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, आपको डाइवर्जन करनी पड़े, तो इन अदर वर्ड्स इट्स अ फेलियर. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऑफिस नहीं पहुंचना. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आज का काम बंद कर देना है. और इसका ये मतलब नहीं कि आप, या लेट्स सपोज आपका अगर इफ यू हैव किड्स, इफ यू हैव फैमिली एट होम एंड योर किड्स डिमांड्स के मुझे मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खानी है, और आपको पता चलता है जी मैकडॉनल्ड्स बंद है, तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. क्या आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है, we can get the walls ice cream, but it's an ice cream. We will get that one some other day, not today, but we will be to fulfill the requirement of today's time. Let's have walls ice cream. So failure you are encountering
every moment. And in other ways, I give you an example. You are encountering every second, every day, or every heartbeat, and then a failure. It's the failure of death. One day death will be successful and your life will be failed. So you are encountering failure every second, in my belief. Well, right decision is, it varies for me in different aspect. As I said, the decisions are not wrong. Mostly the results are wrong. It's not as per our prediction or as per our plan. But you can say that a few factors which is very important. First, you're giving the time. The second, your honesty with that decision. This matters a lot. Honesty. Most of the time we become dishonest. We become dishonest in this respect. We change our mind in between. Sometimes we listen to the people who are irrelevant with our job or with our, you can say, or maybe sometimes we are somebody who is negative, and he's shifting that negativity into our plan of work. Do not involve that irrelevant person into your work. You just ask them, okay man, your job is to give me the water, your job is to provide me the food, your job is not to tell me in this respect that this is the design, this is my field, this is my way of design. If that observation, I've said observation is something different. Making part of anybody's into your decision makes sometimes a problem. And again, like if you are a doctor and you are taking help from another doctor, senior or junior, that is different. But if you are a doctor and you are taking help from a car mechanic, it is different. Yeah, no, the negativity kills positive energy. That देयर इज कुरान की आयत है, अलम नशरा जो है, आप सूरह अलम नशरा देखें तो अल्लाह मीन ने कहा उसमें, और 2 दफा कहा कि बेशक आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। तो 2 दफा आसानी है, मुश्किल 1 दफा है। तो और सूरह हदीद में भी अल्लाह मीन ने कहा हुआ है वो कि दिन जो है उसके बाद रात, उनके रात के बाद दिन है, ठीक है, तू जो लैला फिल नहारी, और यानी कि रात के बाद दिन है। So there is always positivity coming, even if negativity is inside yourself. You have to overcome, get yourself connected with Allah. जहां पे भी आप क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी जो कनेक्टिविटी है आपकी मशीन को सबसे अच्छा जो समझ सकता है वो रब की जात है। So you have to always have a connection with रब की जात से, ठीक है। अगर आप वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हो तो आधी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल से 100% ही खत्म हो जाती है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि मेक इन योर एवरी प्लान, इवन इन योर लाइफ, इन योर इवन इफ यू आर इन हैविंग अ रिलेशनशिप, मेक योर रब अल्लाह को उसमें आप मेक अ पार्टनर टू दैट वन। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड with your parents, with your kids, with your wife, with your even friends, do it because it is being said in Quran, it is being asked, and you are because you have one sense of achievement that I'm doing it for. If you're doing a good deed, if you're earning, because Allah मैंने रिज़्क़ कमाने को कहा है, अल्लाह मैंने कहा हाथ से कमा रोजी कमाने वाला। So keep that energy from from Quran, drive that energy, because negativity आती है mostly। बहुत से लोग हमें हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं with negativity because they might be jealous, they might be not happy from what we are, or they might foresee that we will be achieving that one, so they are interacting। शैतान का जिस तरह शैतान डालता ही डालता है काम चीजों में कोई ना कोई, तो आपको इन चीजों से ओवरकम करना ही करना है। yes, this rightly said कि मुश्किल के साथ आसानी है। so I just wanted to clear the concept that one कि आसानी है आपके लिए, आसानी डेफिनेटली है। रात के बाद जो है अल्लाह मैंने कह दिया दिन है, और फिर अल्लाह मैंने ये भी कह दिया कि ये मैं लोगों के दरमियान दिनों को बदलता रहता हूँ। सो
you can pray to them, you can pray to Allah, you can ask, or you can ask your uh, make your family to pray for you as well. This is very important. Make them part of your success as well, कि भाई ठीक है आपका काम ये नहीं, आप दुआ तो कर सकते हैं ना. That is also very important. So in your life, these are the few energies which can overcome your negativity, which is very, which all for you most of the time you encounter with these things. Ji. Anyone else, guys? Any questions? Anything else, or should we conclude this conversation? Ji, Sir, ji. I think conclude करते हैं. Ji, thank you. Sir, it was very nice to have you on board. काफी कुछ सीखने को मिला. Thank you, Ji. So nice of you, Ji. Thank you, sir.